Hello student. So I have already explained you about the basic result of similarity. Now see, we will get more result. Number one, if two triangles are similar, no need to prove the similarity here. It is given that triangles are similar. If two triangles are similar, suppose triangle ABC is similar to triangle PQR, right? Triangle ABC is similar to triangle PQR, right? Number one result, which is very important result, we can find out the ratio of triangle, area of ratio of triangle ABC to the area of triangle PQR. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, नो नीड टू प्रूव, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, हम इन दो ट्राइंगल्स के एरिया के बीच का रेशियो ले सकते हैं, राइट? तो टू फाइंड आउट द एरिया, what I am doing, I am just drawing a perpendicular AM and PN to the side BC and QR respectively, right? And let A1 is the area of this triangle ABC. A1 stands for the area of triangle ABC and A2 stands for the area of triangle PQR, right? Now see, A1 upon A2, we are finding out the ratio between the areas of similar triangles. So A1, that is the area of triangle ABC, half into base into height. This is the area of the triangle ABC. I am just using a formula, should be known to everyone. Similarly, A2 can be calculated half into base to the corresponding height multiplied by, that is Pn, right? Now I am dividing these two to find out the ratios. So dividing A1 upon A2, what we will get? Half of cancels. We are getting BC upon QR multiplied by AM divided by Pn. AM divided by Pn. Clear? As triangles are similar, so we have very basic important result is with us, that is all the three sides will be in equal ratio. Clear? ये रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइंगल सिमिलर है तो what we have the result, we have AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. ये ऑलरेडी हमारे पास है because the triangles are similar to each other. Now see there, in place of BC upon QR, right? What can I write? Now look at these two triangles. अब इन दो ट्राइंगल्स को देखिए, दिस वन एंड दिस वन सिमिलर है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, राइट? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन बाई कंस्ट्रक्शन, बिकॉज आई हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द ट्राइंगल. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दिस triangle is similar to this triangle by angle and geometry. Clear your concept with the help of the first video. These two triangles are similar. Now what does it mean? It means AB upon PQ is equal to AM upon PN or not, right? So we have these three parts are equal to AM upon PN also. इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बीच के रेशियो भी आपस में बराबर होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ सिमिलैरिटी. नाउ इन प्लेस ऑफ BC अपॉन QR, इन प्लेस ऑफ BC अपॉन QR और इन प्लेस ऑफ AM अपॉन PN, आई कैन राइट BC अपॉन QR, AM upon PN is equal to BC upon QR.
अब इसको यहाँ रख देते हैं. What we will get, A1 upon AT is equal to BC upon QR into this can be written as BC upon QR. So we get that if the two triangles are similar to each other, their corresponding parts are in equal ratio, as well as their corresponding altitudes are in the same ratio as the corresponding parts are, and we can find out the ratio between the areas of two similar triangles. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पहले वाले का एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का एरिया इज इक्वल टू उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर, राइट. तो it means A1 upon A2 is equal to BC upon QR whole square, but BC upon QR is equal to AB upon PQ is equal to AC upon PR. इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर होता है. BC upon QR can be replaced by AB upon PQ and it can be replaced by AC upon PR. So finally we can conclude that if two triangles are similar to each other, right, then the ratio between their area will be equal to the square of the ratio of their corresponding parts, right. In so many questions you have to apply this result. So this is an important result which we are getting with the help of this diagram, because we have to take out the area. So area can be taken out just by drawing a perpendicular to both the triangles, right, and it gives you this triangle is similar to this triangle also, and the rest part you can find out the ratio between their areas, right. So if the two triangles are similar, this is the theorem, then we have the ratio between their area also, if we know the ratio between their corresponding parts. So this is very important here, right. Then see, if two triangles are similar, so many other results we can find out. What happens? Just look at here, if these two triangles are similar, to each other, then as they are similar to result which we have already AP upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. ये बराबर होगा. सपोज ये k के इक्वल है, सपोज ये, बिकॉज इट विल बी इक्वल टू सम नंबर एंड दैट नंबर इज k. तो just applying basic thing, equalizing these two parts, we will get AB is equal to KPQ. Equating this and this, we will get BC is equal to KQR. Equating these two, we will get AC is equal to KPR. We get these three results, right. Now adding these three, so AB plus BC plus AC, and adding vertically these three results is equal to, just taking the k common inside the bracket k, it will be PQ plus QR plus PR, right. तो if two triangles are similar, ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा. और what is this? This is the perimeter of the first triangle, addition of all sides. AB plus BC plus AC is equal to perimeter, which I am denoting by P1. P1 is the perimeter of triangle ABC. K times PQ plus QR plus PR is the perimeter of the second triangle, denoted by P2. It gives you P1 upon P2 is equal to K.
and K is what? K is the ratio between their corresponding parts. इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो के बराबर ही होता है, राइट? पहले सीखा था अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है, राइट? And from this result what we are getting that if two triangles are similar then the ratio between their corresponding perimeter can be taken out and it is just equal to their corresponding sides. So this is the second result, right? One more result we can find out. If these two triangles are similar and suppose this is the angular bisector of angle A, angular bisector, because the triangles are similar it means this angle is equal to this angle. Suppose this is alpha, this is alpha. Just look at the figure. वही से मैं प्रूफ कर रहा हूँ क्योंकि इतना जानने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड इट. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, दैट इज अल्फा, राइट? एंड ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल दैट इज अल्फा बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा बाई 2, राइट? ये ऑलरेडी सिमिलर है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इट इज गिवन, राइट? इसका मतलब क्या? इसका मतलब वंस अगेन दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बिकॉज अल्फा बाई 2 ये अल्फा बाई 2 और ये आपस में बराबर alpha by 2 angle B is equal to angle Q. In this triangle and this triangle we are getting two angles equal to each other. Once again these two triangles are similar to each other by angle axiom. If they are similar then AB upon PQ will be equal to AM upon PN or not? इससे क्या रिजल्ट दे दिया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, और साथ में एंगुलर बाइसेक्टर भी मिल जाए, ये एम अपॉन पी एन के इक्वल भी होगा. इट मीन्स इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सी हाउ मेनी रिजल्ट्स वी आर गेटिंग. द रेशियो बिटवीन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल टू द रेशियो बिटवीन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑल्सो, राइट? तो तीन रिजल्ट्स आ गए. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं गिवन है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स के रेशियो के बराबर भी होगा, राइट? थैंक यू.